हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, E वैल्यू बेस्ड और समथिंग टू डू करवाने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। A. Fill in the blanks. Number 1. Animals are heterotrophs as they cannot synthesize their own food. Question number 2. The roots of a plant absorb water and minerals from the soil. Question number 3. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen. Question number 4. Stomata are the tiny pores through which leaves exchange gases. Question number 5. Insect-eating plants are called insectivorous plants. Question number 6. An essential raw material needed for the process of photosynthesis and A. Available in the soil is water and minerals. B. Available in the air is carbon dioxide. B. Match the following. Chlorophyll का होगा leaf, lichens का symbiotic relationship, fungi का saprotrophs, अमरबेल का पैरासाइट और प्लांट्स का ऑटोट्रॉफ्स। अब सी टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1. ग्रीन प्लांट्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर नोन एज, तो इसका होगा ऑटोट्रॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 2. द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज इट्स, तो इसका होगा लीफ। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो इसका होगा पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4. मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए और एन, तो इसका होगा सैप्रोट्रॉफ। 5. एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल इज, तो इसका होगा राइजोबियम। अब हम लोग करेंगे डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। Question number 1. Why is the nutrition important for a living organism? Answer. Nutrition helps living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and to provide the energy to carry out life processes. Question number 2. How do green plants synthesize their food? Answer. The synthesis of food in green plants occurs in their leaves. The leaves have a green pigment called chlorophyll which captures the energy of the sunlight, and using carbon dioxide and water, the leaves synthesize their food by a process called photosynthesis. Question number 3. State the role of vessels present in a plant. Answer. Vessels are channels to transport water and minerals to various parts of a plant. Question number 4. Define the following. A. Symbiotic relationship. B. Nutrients. C. Saprotrophic mode of nutrition. D. Photosynthesis. Answer. A symbiotic relationship. So sometimes two organisms live in close association with each other and develop a relationship which is beneficial to both. Such a relationship is called a symbiotic relationship. B. The components of food which are necessary for our body are called as nutrients. C. Saprotrophic mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which some organisms feed on dead and decaying matter. D. Photosynthesis. It is defined as a process in which green plants synthesize their food by using CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen. इसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप जो बुक में लिखा हुआ इक्वेशन है वो भी याद कर सकते हैं, बस ये थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। देखिए ये वाला इक्वेशन जो पेज नंबर 3 में दिया गया है वो भी आप लिख सकते हैं, ये सेम इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है. When some wheat dough was left in the open for a few days, it started emitting a foul smell. State why. Answer. When some wheat dough was exposed to atmosphere for a few days, oxidation takes place, making the dough rancid. Thus, it emits a foul smell. Now, E. Answer the following questions. Question number 1. Why would life not be possible on the earth in the absence of photosynthesis? Answer. Photosynthesis is a unique process. It is the process that supplies food directly or indirectly for all living organisms. The energy of the sun thus gets passed on to all organisms through plants.
Plants also provide oxygen needed by all living organisms for respiration. Thus, we can't imagine life on Earth without photosynthesis. क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. ए मशरूम इज अ सैप्रोट्रॉफ. तो इसका आंसर होगा मशरूम इज अ सैप्रोट्रॉफ एज इट ग्रोज ऑन रॉटन वुड एंड डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर इट्स न्यूट्रिशन. बी का होगा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आंसर सन इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज प्लांट सिंथेसाइज फॉर देयर न्यूट्रिशन. C है the leaf of a plant dies out if its stomata are blocked. Answer, if stomata gets blocked, the exchange of gases from the atmosphere stops and thus leaves become yellowish and falls off. D. Leaf is known as the food factory of the plant. Answer, the synthesis of food in plants occurs in their leaves. Hence, leaves are called food factories of the plants. E. Lichen is a living partnership between a fungus and an algae. Answer, this partnership is beneficial to both. तो इसका आंसर होगा the fungus absorbs water and provides shelter. The alga prepares food by photosynthesis. Thus, it shows symbiotic relationship. अब क्वेश्चन नंबर 3 है why do some plants feed on insects? How does a pitcher plant catch insects? Answer, some plants feed on insects for their nitrogen requirements. The leaf of the pitcher plants gets modified to form a pitcher with a lid. This lid is able to open and close the mouth of the pitcher. The pitcher is lined with downward pointing hairs when an insect enters. It cannot climb back out of against the hairs and ultimately falls to the bottom of the leaf and gets digested by the juices present there. Question number 4. How do rhizobium bacteria and leguminous plants help each other in their survival? Answer, rhizobium is a bacterium that lives in the roots of leguminous plants. It converts nitrogen from the atmosphere into a usable form that can be utilized by the plants, in turn provide food and shelter to the bacterium. अब क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द वेब चार्ट. इसमें आपको ये वेब चार्ट कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर होगा वाटर, यहाँ पर क्लोरोफिल, यहाँ प्रेजेंट ऑन लीफ और यहाँ पर ग्लूकोज. अब हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. वैल्यू बेस्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 2 वैल्यूज दैट अकॉर्डिंग टू यू मस्ट हैव बीन देयर इन द 2 फ्रेंड्स ऑफ द फिल्म दोस्त. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रस्ट ऑन ईच अदर एंड कोऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 2 है इन व्हाट वे इज द फ्रेंडशिप बिटवीन द 2 बॉयज सिमिलर टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स. आंसर होगा इन बोथ द केसेस बोथ द पार्टनर्स हैव सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. दे यूटिलाइज देयर स्ट्रेंथ टू बेनिफिट ईच अदर. अब क्वेश्चन नंबर 3 है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स. तो इसका आंसर होगा लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी. अब हम लोग करेंगे समथिंग टू डू. क्वेश्चन नंबर 1 है कंपोज अ फ्यू लाइन्स और पोएम ऑन द यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स. तो इसमें पोएम मैंने लिखा है, इसमें ये होगा ग्रीन एंड जेंटल प्लांट अराइज ब्रीदिंग लाइफ बीनीथ द स्काइज. They gift us food, they gift us air, a silent guardian everywhere. From healing herbs to a towering trees, they cool the earth and calm the breeze. In every leaf a promise grows of life of hope the world well knows. तो ये पोएम मैंने कंपोज किया. आप अपने से कोई दूसरा पोएम भी कंपोज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर. तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर हेल्प्स फाइट क्लाइमेट चेंज, प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड सपोर्ट लिवलीहुड्स. इट इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी प्लेनेट. फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कीप अ स्टिल मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड इन अ वार्म कॉर्नर ऑफ द किचन एंड ऑब्जर्व इट फॉर 3 to 4 days. कैन यू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. आइडेंटिफाई इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसका आंसर होगा
When we keep a moist piece of bread in a warm corner of the kitchen for 3-4 days, we will likely see bread mold growing on it. The most common mold is Rhizopus stolonifer, also known as black bread mold. It has a saprophytic mode of nutrition. Question 4 है solve the crossword puzzle with the help of the clues given below. तो across में भरना है plant parasite, तो इसका होगा क्यूस्क्यूटा. क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, तो इसका तो होगा फोटोसिंथेसिस यहाँ हो जाएगा. देखिए इसी तरह से हमें एक क्लूज के हेल्प से यहाँ फिल करना है, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया है. यहाँ होगा सिम्बायोटिक, न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, पैरासाइट, उसके बाद हेट्रोट्रॉफ. आप इसे देख के फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर खत्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.